रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले हम पहले नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम ब्रॉडली ग्रुप में नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कॉन्सेप्ट जो है हम क्लास 11th में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बेहतर हम अपने रियल नंबर को बारे में डिस्कस करते हैं। रियल नंबर को मुख्य रूप से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर किस में डिवाइड होता है? इंटीजर्स में एंड फ्रैक्शंस में। इंटीजर्स को हम होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिवाइड कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर फ्रॉम दिस डायग्राम, because zero come into the category of whole number, not in the category of natural number. In the same way, every whole number is integers, but every integers are not whole number, because -1, -2, -100, all these are integers but not the whole number. Okay. This I give you overview, and this you study, I think you have studied in class 9th. Okay, now I want to discuss the real number regarding class 10th. हम क्लास 10th के हिसाब से डिस्कस करते हैं। इन क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.1 you have to find out the SCF of two number with the help of Euclid division algorithm. If in the question it is not given that you have to find out the SCF with Euclid division algorithm, then you can find out the SCF with any method by using long division method or prime factorization methods. But if it is given that in question that you have to find out the SCF with the help of Euclid division algorithm, then you have to follow that method only. Now I come to the exercise 1.1 and question number 1 of division algorithm. Euclid Euclid's division algorithm. In this, B is equal to A into Q plus R, where R is greater than or equal to 0 but less than divisor, means A. In this formula, B represent the dividend, A represent divisor, whereas Q represent quotient and R for remainder. In other words, we can say that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, where remainder is greater than or equal to 0 but less than divisor. When a division is completely divided, then we will get the remainder 0. Otherwise, we get whatever remainder we get is less than the remainder, means divisor. Okay. Now question number 1, we have to find out the SCF of 135 and 225. Now I want to erase this. Suppose if you feel any difficulty to solve the SCF directly with the help of Euclid division algorithm, then you have to take the help of long division method. Suppose you divide 225 by 135, it goes this one 0 and 9, then 135 again 1 time, you will get 45 and 90, again 2 time
This is the long division method. This is the long division method. Now I am converting this into the Euclid. How? You see, by Euclid division algorithm. Okay. In this, here is dividend, this one is divisor, and this is quotient, and this is the remainder. So 225 is equal to 135 into 1, that is quotient, and in this one, this is 90 is the remainder. This is the first equation. Now it comes in this category. Here the dividend is 135, divisor is 90, quotient is 1, and remainder is 45. Now write down this one like this. 135 is equal to 90 into 1 plus 45. This is the second equation. Now come to the third one. This is the dividend, divisor, quotient, and remainder is 0. You follow this method up to that when जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए. You follow the process up to where you will not find out the remainder 0. Is 90 is equal to 45 into 2 plus remainder is 0. Now here you find out, or you will get the remainder 0. Now on this line the divisor become the SCF. SCF is of 135 and 225 is equal to 45. This is the method. Okay. If you like my video or my teaching, so please subscribe it and share it to your friend and your family members. Thank you. Now come to the question number first, second part. Number is 196 and 38220. Now again I follow the long division method, है ना. मैं यहाँ पर भी long division method follow करूँगा और उसी को मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर दूँगा. Now I divide this number means this goes one time, means 196, means 6 here is 18 and 1 and 2. Again this goes by 9, 50 and 6, 7. Again 8, this 9 and 0, this goes by 5. यहाँ पर एक ही बार में ही डिवाइड पूरा हो गया. अब हम क्या करते हैं, इसको एक ही स्टेटमेंट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे और एक ही स्टेटमेंट में हमको आंसर प्राप्त मिल जाएगा. Now here I write by Euclid division algorithm. Now dividend is here 28220. Now divisor is 196, quotient is 195 and remainder is 0. मैंने पहले आपको बताया था जिस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में आपको 0 मिल जाए रिमाइंडर में, उसी का डिवाइजर ही एससीएफ बन जाता है. और इसमें वन टाइम में ही हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, तो यहाँ पर जो डिवाइजर होगा वो हमारा एससीएफ हो जाएगा. डिवाइजर हियर इज 196 and that become the SCF of given numbers.
क्या है गिवन नंबर 196 and 38220. I think you understand clearly how we calculate the SCF of given numbers with the help of long division methods, and we convert the long division method into Euclid division algorithm. Okay, now come to the third question. हेलो फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर आते हैं। अब हम मानते हैं कि आपका कैलकुलेशन बहुत बेहतर है, तो हम सीधे इसको बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही सॉल्व करते हैं। जो नंबर सबसे बड़ा है उसको हम एज ए डिविडेंड के रूप में कंसिडर करते हैं, और जो छोटा है वैसे डिवाइजर के रूप में। सो हियर दिस नंबर इज बिगर वन और लार्जर वन, so we write down here means in the division part by Euclid's division by Euclid division algorithm. Okay. This number is as larger one, so we write here. ये नंबर बड़ा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिविडेंड की जगह। ये नंबर स्मॉलर वन तो ये डिवाइजर हो गया 255. Now if I divide this number by this, I calculate. I think this goes up to 3 times. ये 3 बार में चला जाएगा। हम देख लेते हैं कितना ये आ गया हमारा, मीन्स 765. You minus 676 from this, you get 102. ये रिमाइंडर हो गया, you write here. Now this becomes the first equation. Now the divisor of the first equation becomes the dividend of the second equation. 255 become the dividend. Now remainder become the divisor, means 102 into. अब यहाँ पर quotient लिखना है. You have to write down the quotient here. Before that you have to divide 255 with 102. कितनी बार जाएगा? 2 times, means 204. Write down here 255 and 204. You will get 51. Here is remainder is 51, and this becomes the equation number second. Now again the divisor of this statement become the dividend in third, and the remainder become the divisor. Again you divide by 102 with 51, you will get 2s, and the remainder is 0. Again इस स्टेटमेंट में रिमाइंडर 0 बन गया, तो डिवाइजर जो होगा इस स्टेटमेंट का वो एचसीएफ हो जाएगा दिए गए नंबर का। एचसीएफ ऑफ 867 and 255 is equal to 51. इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं if you are good in calculation. Okay, I think you like my video. Thank you.